Okay, so today we are going to start with new chapter, and the chapter is magnetic fields due to electric current, which was earlier called as magnetic effect of electric current. So we'll start with a new chapter. It's very interesting, easy, and important as well. So the chapter is magnetic effect or magnetic fields, magnetic fields due to electric current. Right. So what we have learned so far? So far we have learned about electrostatics. In electrostatics, आपको पता होगा that the charges were at rest. So I had a charge or one charge here. It was at rest. This charge generates an electric field in the region surrounding it. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दूसरा चार्ज आ गया तो that charge will experience a force, and that force is given by k q1 q2 by r square, where r was distance between these two charges, right? So whenever charges are at rest, they have only force, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस आर एट रेस्ट. So charges at rest do exert electrostatic force on each other, या फिर force due to electric field भी बोल सकते हो. So whenever charges are at rest, you have only electric fields, right? Only electric fields. What happens when charges are set into motion? जब charges move होने लगते हैं, in addition, ये word important है, in addition to electric field, they also produce magnetic fields. This question was asked, मुझे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, how do you produce magnetic fields? Okay, then मैंने बोला चार्ज को धक्का दे दो. धक्का देना मतलब make charge to move. So whenever charges are in motion, they produce, in addition to electric field, they produce magnetic fields. ये important है. मतलब charges move लगे तो electric field गायब हो जाएगा क्या? नहीं, electric field रहता है, additionally magnetic field भी generate होता है. Okay, तो अब जैसे आपको पता है एक स्टैटिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे एक पॉइंट पे निकालना है, वो पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r है. इफ आई वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्टैटिक चार्ज at a point at a distance r from the charge, it is E equal to constant k. That constant k is 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 by r square, and the direction is r cap. So this electric field is always directed from source charge to that point. Good, right? But as I told you, अगर हमने चार्जेस को मोशन में लाया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक वायर है. इफ आई सर्कुलेट अ करंट थ्रू दिस वायर, मैंने इस वायर से अगर एक करंट को पास कर दिया, राइट, देन वी वांट टू नो, एंड बिकॉज करंट है मतलब चार्जेस आर इन मोशन. ओके, and since charges are in motion, as I just told you, those moving charges will generate a magnetic field in the surrounding of the wire. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, वैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. नाउ वी वांट टू नो what is the direction of magnetic field, and the direction of magnetic field is given by a rule which is called as right hand thumb rule. Okay, so the direction of magnetic field can be understood with the help of
a rule which is called as right hand thumb rule. And as you can see here, what we need to do is we need to hold, not in reality, imagine that the current carrying wire is in your right hand with thumb in the direction of current, and the fingers, they are curled around the wire. तो ये जो curled fingers जो है हमारे, these curled fingers give direction of magnetic field. हमको करना क्या है, imagine that a current carrying wire is grabbed with your right hand with the thumb pointing in the direction of current, then your curled fingers give the direction of magnetic field. That is right hand thumb rule, right? So this is how you find out the direction of magnetic fields. अब इंटरेस्टिंगली होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वायर नंबर 1 है जिसमें से मैं करंट पास कर रहा हूं, द करंट थ्रू दिस वायर, लेट अस से वायर 1, there's some current through this wire, and according to this right hand thumb rule, the magnetic field generated by this current carrying wire is in this direction, right? Okay, तो ऐसा भी होगा वो, good. So what happens अगर मैं एक दूसरा वायर लाके इस पहले वायर के सराउंडिंग में रख देता हूं तो, so I bring another wire and that wire also has a current I, and now this second wire, wire number 2, is in the magnetic field of wire 1. ये एक्चुअली म्यूचुअल है, वायर 1 में करंट है तो वायर 1 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में वायर 2 रख दिया जिसमें करंट है तो वो सेकेंड वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट? उल्टा भी है, अगर वायर 2 में करंट है तो वायर 2 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और उसमें अगर आपने वायर 1 को रखा है और वायर 1 भी करंट कैरी कर रहा है तो वो वायर 1 भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. इट इज वेरी सिंपल. इट इज, इफ यू कंपेयर विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज 1 की फील्ड में अगर चार्ज 2 आया तो चार्ज 2 विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, बट अदर वे अराउंड इज आल्सो ट्रू. चार्ज 2 के फील्ड में चार्ज 1 रखा हुआ है तो चार्ज 1 विल आल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स. इसलिए हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 is equal to minus of force on 2 due to 1. So they are pairs, equal and opposite action and reaction. So similar thing is over here. अगर आपके पास एक वायर है उसमें करंट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने दूसरा वायर रख दिया जिसमें करंट है तो वायर नंबर 2 विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स का डायरेक्शन क्या था, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वाज force on 1 due to 2 was this force, and force on 2 due to 1 was this, because both of the charges were positive. अगर दोनों चार्जेस आपके उसमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल चेंज, राइट? तो इन दैट केस बोथ द फोर्सेस विल बी टुवर्ड्स ईच अदर, अट्रैक्टिव फोर्स, करेक्ट? तो सिमिलरली हमको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना है. वो कैसे निकालते हैं? इट इज वेरी इजी टास्क. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब करंट मैंने बॉटम टू टॉप दिखाया है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग द अदर वे राउंड. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है. सो दिस इज व्हाट यू शुड नो. गुड, राइट? So electrons are moving from top to bottom with a velocity v bar, right? And we already know ये जो वायर 1 है, वायर 1 जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है
it is in the direction of curled fingers. So if I keep this diagram here, you will understand कि कहाँ पे जा रहा है magnetic field. Look at wire 2. At every point of wire 2, at every point of wire 2, magnetic field due to wire 1 is going inside the plane. मतलब this is the magnetic field due to wire 1. Correct? Now you have wire 2 in which there is current, in which charges are moving, and this current matlab electrons are moving, and electrons are moving with velocity v bar, and these moving electrons are kept in magnetic field of wire 1. Matlab these moving electrons will experience a force, and that force will be in a direction given by right hand screw rule. So the direction of force will be this F part, right? What you can observe from here is, मैं formulas में बाद में आऊंगा. What do you observe from here is, जब वायर 1 और वायर 2 में दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, ओके, सेम डायरेक्शन में, दिस इज इंपॉर्टेंट. वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, उसमें वायर 2 रखा हुआ है, हम ऐसा बोल रहे हैं, उल्टा भी ट्रू है. वायर 2 के मैग्नेटिक फील्ड में वायर 1 रखा हुआ है, वो भी ट्रू है, right? But magnetic field in the case that we are discussing is due to wire 1, in which there is wire 2 which is kept, and wire 2 also has current in the same direction. In that case, the force due to magnetic field is towards wire 1. मतलब wire 1 और wire 2 they attract each other. मतलब you will see these wires will look like this. तो दो करंट कैरिंग वायर्स को अगर आपने पास में रख दिया तो दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर. करेक्ट? राइट. नाउ वी वांट टू नो, फर्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है दैट करंट है मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी क्या है, v बार है. तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, and the force due to magnetic field is given by charge. Charge in electron is minus E V bar cross B bar. So this is the general formula for force due to magnetic field on moving charges. That is V bar cross B bar. In general, अगर हम जनरल चार्ज की बात करते हैं, जरूरी नहीं ना हर बार इलेक्ट्रॉन्स ही मूव हो रहे होंगे. वी कैन मेक प्रोटॉन्स मूव, वी कैन मेक पॉजिटिव आयन्स मूव, है ना. तो उस केस में इन जनरल magnetic force acting on moving charges is given by Q, where Q is charge, V bar cross P bar. This is force due to magnetic field on moving charges. मैं बार बार moving इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मैंने चार्जेस को रेस्ट पे लाया तो वेलोसिटी जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गया मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, राइट. तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों से आता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्जेस मूव होने चाहिए, राइट. गुड. देन एज आई टोल्ड यू, चार्जेस मूव होने लगे मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, करेक्ट. तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा. बट जब चार्जेस मूव होंगे इसका मतलब ये तो नहीं होता कि उस चार्ज ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लूज कर दिया. तो whenever you have moving charges, they exert electric force due to electric field as well as force due to magnetic field. So you will write F is equal to Fe bar plus Fm bar. Fe bar, force due to electric field, was Q into E bar if you remember, and force due to magnetic field is Q V bar cross B bar. Right. So this is important, and this equation of force
is called as Lorentz force. तो जब चार्जेस मूव होंगे दे विल exert two types of forces, force due to electric field and force due to magnetic field. Easy, correct? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको सब पता है, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो एवरीथिंग, बट फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज समथिंग न्यू टू अस एंड वी ऑलरेडी नो, और मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज वी बार क्रॉस बी बार, है ना, राइट? तो वी बार क्रॉस बी बार is a vector which is perpendicular to both v bar and b bar. अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन याद कर लो। ये अगर मेरे पास b बार है और यहाँ पे अगर मेरे पास v बार है तो v बार क्रॉस b बार इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v बार एंड b बार। तो जिस प्लेन में v बार और b बार होंगे उसको परपेंडिकुलर होगा v बार क्रॉस b बार, करेक्ट? एंड हमको ऑलरेडी पता है कि फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ वी बार क्रॉस बी बार, पता ही है हमको ये, है ना? वी बार क्रॉस बी बार मतलब फोर्स का डायरेक्शन, बराबर, राइट? और फोर्स मतलब वी बार क्रॉस बी बार किसको परपेंडिकुलर है? वी बार को भी है, बी बार को भी है। मतलब ये कि मैं अगर फोर्स और वी बार का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, सो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैं अगर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और वी बार का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो इट शुड टर्न आउट टू बी जीरो, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स by definition is zero. Why by definition? Because this is fmv cos theta and theta is 90 here. ये v और b f और v में एंगल 90 है and cos 90 is zero. तो f m बार डॉट v बार is zero. ये पता होना चाहिए। इसका मतलब ये that you already know what is v bar, you know f m bar, v bar क्या होता है, what is velocity dx bar by dt, right? Correct. So this means if the dot product of f bar dot v bar is zero, it means I can write it like this. मैं लिख सकता हूं, ऐसा क्यों लिख सकता हूं? मैं आपको एक सिंपल बताता हूं चीज। यू नो, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ 2x कैन बी रिटन एज, टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, 2 dx/dt, है ना? 2 dx/dt लिख दिया मैंने यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ 2x, टू कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया। हाँ, तो कांस्टेंट को बाहर अंदर कुछ भी कर सकते हो। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज। चार्ज कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोंट चेंज देयर चार्ज। v bar, we are assuming that velocity of electron is constant. b bar, we are assuming magnetic field is constant. मतलब fm ये हो गया कांस्टेंट, बराबर, वेरी गुड। अभी बुक्स में इतना डिटेल नहीं दिया होता, बुक्स में सिर्फ आपको एक लाइन में बोला होगा, क्या बोला होगा वो आगे आएगा। व्हाट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? वर्क डन, है ना? तो ये आ गया वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। Derivative of any quantity if it is zero, right, then you say that is constant basically. In any case, f bar dot v bar tells you that magnetic field does no work, magnetic field जो है वो work नहीं करते हैं। This is what you should know and we have proved it mathematically, but you don't have to, you just have to write down magnetic force Fm is perpendicular to the displacement of the charges and hence magnetic force never does any work on moving charges. आपको mathematically prove करने की जरूरत नहीं है, correct? So what next thing we would like to know about magnetic fields? By definition,
force due to magnetic field is QVB sin थीटा, है ना। मैंने ये सिर्फ स्केलर फॉर्म लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है, क्योंकि क्या है क्यू वी बार क्रॉस वी बार, व्हाट इज वी बार क्रॉस वी बार, वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज ऑलरेडी 90। यहाँ भी है, यहाँ भी देख सकते हो। ओके, सो इफ इट इज 90 देन यू कैन राइट दिस एज QVB साइन ऑफ 90 इज 1। तो आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन Q इंटू V। फोर्स इज न्यूटन, चार्ज इज चार्ज, एंड यू नो चार्ज कूलम में आता है, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में। तो यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। इसको आप बोलते हो 1 टेस्ला। एंड यू कैन ऑफ कोर्स फाइंड आउट डायमेंशंस आल्सो। अगर आपको डायमेंशंस निकालने होंगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स के डायमेंशंस अपॉन चार्ज के डायमेंशंस इनटू वेलोसिटी के डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशंस m1 l1 t - 2। चार्ज के डायमेंशन आपको पता है, चार्ज के डायमेंशन निकालते आने चाहिए, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ चार्ज। चार्ज करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज करंट इनटू टाइम, तो करंट इनटू टाइम। वेलोसिटी होता है l1 t - 1। कैंसिल करो एंड सॉल्व करो, you will get dimensions of magnetic field, right? So I'll repeat what I have told you so far, and we will see, we will write down this also. So today we started off with a new chapter, that is magnetic fields due to electric current. Okay, सबसे पहले basic thing is what we know so far। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये सीखा था कि when charges are at rest they create electric field in their surrounding, and when any other charge is there in that field, that charge will experience a force। So electrostatic charges produce electric field and they exert force due to electric fields on each other। This is what we know so far। अब अगर चार्जेस मूव होने लगे तो क्या होगा? If charges start moving, then additionally they also generate magnetic fields in the surrounding medium। अब जब फील्ड ये वर्ड आता है मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फर्स्ट थिंग। So we need to know what is the direction of magnetic field, that is given by right hand thumb rule, जिसका डायग्राम मैंने ऊपर ड्रॉ किया है। Let me call this as some figure 1, and that is telling us that this is right hand thumb rule। So figure 1 tells us the direction of magnetic field। तो अगर magnetic field की डायरेक्शन निकालनी है, what you have to do is a very simple thing। You just have to take a current carrying conductor। आपको सिर्फ एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है, करंट कैरिंग वायर लेना है आपके राइट हैंड में। ओके, एंड यू हैव टू hold that current carrying wire in your right hand as shown in figure, with the thumb stretched in the direction of current and the fingers curled around the wire। So the curled fingers give you direction of magnetic field। इतना ही है, it's very simple thing। So you should know that how to find out direction of magnetic field। easy है, करंट कैरिंग वायर को आपके राइट हैंड में लो, थंब को आउटस्ट्रेच करो in the direction of current, and the curled fingers around the wire give you direction of magnetic field। अब we'll go one step ahead now। अब हमारे पास वायर 1 था जिसमें करंट है, उस वायर 1 के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है सराउंडिंग मीडियम में,
और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने वायर 2 को रख दिया और वायर 2 में भी करंट है, राइट? तो वायर 2 will experience a force due to magnetic field of wire 1 since wire 2 is kept inside the magnetic field of wire 1. Now we know that if the current in the wire 2 is from bottom to top, नीचे से ऊपर, तो electrons are flowing in the opposite direction, that is top to bottom. So you know the direction of velocity vector, you know the direction of magnetic field, right? And force on moving charge due to magnetic field is given by q v bar cross b bar, right? In this case we have q as electrons, so v bar cross b bar into minus e. तो उस पे जो फोर्स लगेगा that will be in the direction of wire 1. What we can conclude is, ये हम आगे देखेंगे बाद में, if you have two wires kept close to each other having current in the same direction, they attract each other, right? And what else we can say, this is force due to magnetic field, by the way. Total force will be force due to electric field plus force due to magnetic field, क्योंकि चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, राइट? और चार्जेस मूविंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है एडिशनली, तो टोटल फोर्स इज Fe plus Fm. Force due to electric field is Q into E bar and force due to magnetic field is Q V bar cross B bar, right? Good, simple. तो पहले हम लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लेते हैं and then we will go ahead with other things. So figure 2 gives you force on wire 2 due to current in wire 1. Figure 2 gives you force on wire 1 due to magnetic field, force on wire 2 actually, not 1, force on wire 2 due to magnetic field of wire 1, right? So let's start with introduction. जो कुछ मैंने बताया है आपको अभी, little bit of introduction that we will write down. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, what is right and thumb rule, etc etc. So in electrostatics we have considered static charges, we have considered static charges and the force exerted by them on other charge or test charge, right? We now consider, हमको भी देखना है what are the charges, what are the forces on charges in motion. We now consider forces between charges in motion. We'll start with explaining what is right hand thumb rule first, and then we will move ahead with defining magnetic force. Imagine that a current carrying wire is grabbed with your right
and such that the thumb such that the thumb outstretched thumb points in the direction of the current and the fingers are curled around the wire as shown in figure 1, right? So the curled fingers give the direction of gives the direction of magnetic field. That is sufficient for us to understand. इतना ही जरूरी था हमारे लिए. Now something more basics that you want to know, you must know is जब एक दूसरा वायर पहले वायर के पास रख दिया तो क्या होगा, right? So if another current carrying wire, if another current carrying wire 2 is kept near wire 1, it will experience a force due to magnetic field of wire 1 as shown in figure 2, right? तो हमको फिलहाल इतना ही लिखना सफिशिएंट है. वी डोंट नीड टू गो a lot into details of direction क्योंकि वो आगे आने ही वाला है. हमको इक्वेशंस डिराइव करने पड़ेंगे. व्हाट इज द फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ. So we'll do that when we need it. Now it is important for us to define what is magnetic force. At least little bit we should do it today. तो मैग्नेटिक फोर्स मतलब क्या है वो देखते हैं हम लोग. Yes. Okay, so 10.2 magnetic force. All right. Right. So as we discussed few minutes back that the magnetic force on an electron moving with a charge, of course, with a charge of minus E, moving with velocity V, moving with velocity V is given by, in a magnetic field, in a magnetic field B is given by. So what is the force on an electron which is moving with a velocity v bar in a magnetic field b bar? That is given by F m bar equal to minus E
V bar cross V bar. In general, you can write down in general for a charge Q, for a charge Q, the magnetic force will be Fm bar equal to Q V bar क्रॉस V bar. ये Q के ऊपर बार लिखने की जरूरत नहीं है. चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. V bar cross V bar. Let me call this as equation number 1, equation number 2. Right now, अगर हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q? So if both electric field E bar and magnetic field B bar are present, the net force on charge Q moving with velocity V bar is given by, so net charge total force is Fe bar plus Fm bar, where Fe is, you already know, Q into E bar, and Fm is Q V bar cross V bar. So F bar is equal to Q common E bar plus V bar cross V bar. Equation number 3. Now this equation number 3 is known as Lorentz force. Equation 3 is known as Lorentz force. Okay, so this is a very simple thing. Now जो अभी हमारा बाकी क्या है, सिर्फ डायरेक्शंस की बात करनी है हमको. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ V bar क्रॉस V bar, मतलब व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स or what are dimensions of magnetic field, that will be carry forwarded for next session, that is tomorrow.